Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudhire Nasya Prayesha Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. लाइव श्लोका भी कर दिया. Again have come. Yesterday also they came and they went away because of too much rain. Today they come, no rain now. What they are doing? What is obstructing? We can go on.
क्या है भाई ये? हिंदी भी चाहिए या यही चलेगा? ओके। हाँ, ये भी क्या है भाई? ठीक है, थोड़ा छोटा करो आप। Shloka is correct. नूनं देवेन विहता ये च अच्युत कथा शुद्धम हित्वा शिन्वन्ति असद्गातः पुरीशम इव विद्भुजः नूनं देवेन विहता ये च अच्युत कथा शुद्धम हित्वा शिन्वन्ति असद्गातः पुरीशम इव विद्भुजः नूनं देवेन विहता ये च अच्युत कथा शुद्धम हित्वा शिन्वन्ति असद्गातः पुरीशम इव विद्भुजः
Nunam, certainly. Devena, by the order of the Lord. Vihataha, condemned. Ye, those who. Cha, also. Achyuta, of the infallible Lord. Katha, stories. Shudham, nectar. Hitva, having given up. Shanuvanti, they hear. Asadgataha, stories about materialistic persons. Purisham, stool. Eva, like. Vidbhujaha, stool eaters, hogs. Such persons are condemned by the supreme order of the Lord because they are averse to the nectar of the activity of the personality of Godhead. They are compared to stool-eating hogs. They give up hearing the transcendental activity of the Lord and indulge in hearing of the abominable activity of the materialistic persons. Such persons are condemned by the supreme order of the Lord because they are averse to the nectar of the activities of the Supreme Personality Godhead. They are compared to stool-eating hogs. They give up hearing the transcendental activities of the Lord and indulge in hearing of the abominable activities of the materialistic persons. Yes, Supriya Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Everyone is addicted to hearing of the activities of another person, whether a politician or a rich man or an imaginary character whose activities are created in a novel. There are so many nonsensical literature, stories, and books of speculative philosophy. Materialistic persons are very interested in reading such literature, but when they are presented with genuine books of knowledge like Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Vishnu Purana, or other scriptures of the world, such as the Bible or Quran, they are not interested. These persons are condemned by the Supreme Lord as much as hog is condemned. The hog is interested in eating stool. If the hog is offered some nice preparation made of condensed milk or ghee, he won't like it. He would prefer obnoxious, bad-smelling stool, which he finds very relishable. Materialistic persons are considered condemned because they are interested in hellish activities and not in transcendental activities. The message of the Lord's activity is nectar, and besides that message, any information in which we may be interested is actually hellish. Hare Krishna Prabhu. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunavadi Pashata Deshatarine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nunam Devena Vihata Ye Cha Achyuta Katha Shudham Hitva Shunvanti Asadgataha
Purisham iva vidbhuja. Such persons are condemned by the supreme order of the Lord because they are averse to the nectar of the activities of the Supreme Personality Godhead. They compare to the stool-eating hawk. They give up hearing of the transcendental activity of the Lord and indulge in hearing of the abominable activities of the materialistic persons. Hare Krishna, audio is clear. Just put in the chat, find it clear. I check my settings. Yes, it should be clear. Sometimes I really wonder why so much emphasis is on hearing. Doesn't me wonder? Because hearing again and again is emphasized. You see in Bhagavad Gita, 7th chapter, 1st shloka, what does it say? Maya sakta mana partha yogam junjam madhashayam asamshayam samagram vam yathagyasati tat shunu. Here. And if you hear, everything will happen. We go to college, we enter, we hear, we become an engineer. Correct? So hearing has been given so much importance in the Vedic literature. And our life, you see, none of us have a serious program for hearing every day. When every day we should design our next day. Even if you are not able to do, start writing. Okay, this is my day. And first thing you put is your hearing for the day. This time to this time, I will chant. This time to this time, I will read Prabhupada books. This time, I will hear the Bhagavatam class, Gita class. Correct? Hearing is given the most importance. And we see all the great acharyas, everything happened by hearing. Total change occurred. Parikshit Maharaj was about to leave the body. Shukdev Goswami came and he said, please hear. He was in great anxiety. Parikshit Maharaj was in so much anxiety. What should I do? Now my point of death has come. So Shukdev Goswami says, yes, if you want to be free from fear, just hear. Activities of Krishna. Bhagavan Harihi. Shotavya kirtitavyasya smartava ichatam abhayam. Yes. Look at the shloka again. Second canto in the 4th or 5th verse. Shotavya kirtitavyasya smartavya ichatam abhayam. What different shloka? Shotavya kirtitavyasya smartavya ichatam abhayam. If you want to be fearless, just hear activities of Krishna. And after hearing, in the Navavidha Bhakti also, the first thing is Shravanam. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Vandam, Dasyam, Sakyam, Atma Nivedanam. What is the first thing? Shravanam. If Shravanam is correct, rest will become correct. If Shravanam is correct, then Kirtanam will be correct. Suppose you want to give a good class, what you will do? You will read, no? If Shravanam is correct,
then Kirtanam will be correct. If Shravanam and Kirtanam is correct, then Smaranam will start. Everything is starting from Shravanam. If Shravanam is correct, then Archanam will also be correct. You'll know how to do. What is most important? And the joke is, we don't plan our hearing for a day. And the hearing is not, in fact, as we came, we forgot how we came to Krishna consciousness, all of us. How did we come? Somehow by good fortune, we heard a devotee. एको भक्त को सुन लिया गलती से, हमारा भाग्य था. ये अब भूल गए हम लोग. या कीर्तन सुना या प्रवचन सुना, कहीं सुना ही था, है ना? भटक रहे थे हम भी. ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव. हम तो भटक रहे थे, लेकिन हमारा भाग्य था कि हमने भगवान के कुछ शब्द को सुन लिया और जिंदगी बदल गई. करेक्ट? यस. Second canto, first chapter, 4th or 5th verse. Bhagavan Ishvaro Hari Shrotavya Kirtitavya Cha Smartavya Ichatam Avayam. I am asking the first line. Okay. They had already given me. Yeah, here it is. Yes. देखो. तस्माद भारत सर्वात्मा Bhagavan Ishvaro Harihi. Why Tasmat it says? Tasmat means therefore. In fact, even previous verses are very connected. Let me repeat here for the today's topic. When Parikshit Maharaj says, what should I do? My time of death is coming. What is my duty? So Shukamuni says, वरियाम एशते प्रश्न. अरे क्या प्रश्न पूछ दिया, मजा आ गया. वरियाम एशते प्रश्न कृतलोक हितम नृपहा आतवित सम्मता पुंसा श्रोतव्यादिनु यह परहा. क्या प्रश्न है, मजा आ गया. ही इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर आस्किंग सच अ क्वेश्चन. व्हाट शुड आई डू एट द टाइम ऑफ डेथ? व्हाट अ क्वेश्चन. व्हाट इज माय ड्यूटी? इवन एट द टाइम ऑफ डेथ ही इज थिंकिंग व्हाट इज द ड्यूटी. See, there is very much different opposite culture. Today, आजकल कल्चर है राइट्स का. मेरा क्या अधिकार है ना? तमाशा मचाते हैं लोग. मेरा अधिकार, रैली होती है, प्रोटेस्ट होता है ना? स्ट्राइक होता है. मेरा अधिकार नहीं मिला तो लोग स्ट्राइक कर देते हैं आजकल. वैदिक कल्चर स्ट्राइक का नहीं, अधिकार का नहीं है. वैदिक कल्चर कर्तव्य का है. मेरा क्या कर्तव्य? टोटली डिफरेंट कल्चर. एक कल्चर है मेरा राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, वुमेन्स राइट, माइनॉरिटी राइट्स, है ना? मेजोरिटी राइट्स, राइट्स, है ना? अधिकार क्या है? एंड वन कल्चर इज ऑफ कर्तव्य, है ना? कर्मण्येव अधिकारस्ते. व्हाट इज माय कर्तव्य? व्हाट इज माय ड्यूटी? सो परीक्षित महाराज इज आस्किंग इवन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मरते समय भी मेरा क्या कर्तव्य है, इस समय क्या करना चाहिए मेरे को? तो शुकुमुनि बोलते हैं, वाह मजा आ गया, क्या प्रश्न है. ही इज हैप्पी. And then he starts talking. Otherwise, he is silent. He is not bothered. Great saints like Shukadeva Goswami will not open their mouth. They remain silent. Kya baat hai? But when he saw such a question and a sincere question, he said, Variya, waha, maja aa gaya. And then what does he say? Next one. Shota Vyadini Rajendra Ninam Santim Sahasrashaha. People के लोगों के पास 1000 चीजें सुनने के लिए. अपश्यताम आत्म तत्व, लेकिन भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे. आत्म तत्व अपने बारे में भी नहीं सुनेंगे. गृहेषु गृह में देना. ये बेवकूफ लोग भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे. 1000 चीज सुनने के लिए. तो अभी मजाक है ना. एक दिन बिल्ली छज्जे में फंस गई. किसी का पूरे दिन टीवी न्यूज में आ रहा है, बिल्ली छज्जे में फंस गई और रात को बिल्ली कूद गई उधर से. ये लोग जो करोड़ों लोग जो देख रहे थे पूरे दिन, उनको कुछ काम नहीं है क्या? ये सब सुनने के लिए समय है. थोड़ा एक शब्द पढ़ लो गीता का, नहीं समय नहीं है उसके लिए. बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. बहुत बिजी है मैं, बहुत बिजी. ये बकवास का सुन रहा था पूरे दिन. सो एक्चुअली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का साइन होता है. यू मे बी सेइंग, आई एम समटाइम रिपीटिंग, बट व्हाट एल्स टू टेल? The sign of spiritual advancement means
बदबू लगती है। जैसे ही ग्राम्य कथा शुरू हुई, आदमी को घुटन हो जानी चाहिए। ग्राम कथा ना सुनी बे, ना बोली बे। वही सुनोगे तो वही बोलोगे, जो सुनोगे वही सोचोगे और वही बोलोगे। ग्राम कथा ना सुनी बे, बोलेंगे मेरे को तो थोड़ा तो पता करना है ना, दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे को जानना है थोड़ा। ऐसे ही माया, देखो माया ना बहुत धीरे धीरे पकड़ती है। जैसे अगर भरत महाराज को माया को पकड़ना था, अगर अजामिल जैसा टेस्ट होता वो तो चुटकी में पास कर जाता, है ना। भरत महाराज जब जंगल में ध्यान लगा रहे थे, यू ऑल नो द पास्ट टाइम, आई थिंक भरत महाराज वाज ट्राइंग टू मेडिटेट इन द फॉरेस्ट। इफ देयर वाज एन एग्जाम लाइक अजामिला, ही वुड हैव पास्ड लाइक दिस। ही वाज वेरी एडवांस्ड, ही वाज इन भावा स्टेज, श्रद्धा साधु संगा भजन के अनर्थ में निष्ठा। क्योंकि भागवतम डिस्क्राइब्स ही जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड एंड टीयर्स ऑफ, आंसू निकलने लग गए प्रेम के, ऑलमोस्ट प्रेम पहुंच चुका था। वो होता है ना लूडो में 99 में हमेशा एक सांप होता है, टेस्ट। वी शुड नॉट कमेंट ऑन, एज आई सेड, ऑन भरत महाराज, बिकॉज दिस कैन बी लीला ऑफ द लॉर्ड। बिकॉज से अर्जुना और शिवजी जब मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते हैं, इसको हम लोग कमेंट नहीं करते हैं। दिस इज समटाइम लीला ऑफ द लॉर्ड। लीला मतलब अंडर योग माया, but don't therefore comment on Bharat Maharaj. Be careful what you're saying. But at least we are very clear about that he gave up the service to Krishna, correct? And he became, बेटा कैसे है, खाना खाया ना, and he left the service to Krishna, है ना। वो होम भी करता था, उधर देख कर आता था, जब भी करता था उधर देखते रहता था, जैसे हमारा जब होता है। वेरी इंटरेस्टिंग, उसका फोटो देखो, बहुत अच्छा बनाया। वो होम कर रहा है, घी डाल रहा है, ठीक है, लेकिन नजर हिरण में जैसे हमारा जब होता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। बहुत अच्छा है, मतलब हमारे लिए दैट्स द बेस्ट पिक्चर टू टीच अस हाउ टू नॉट टू चैंट। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो भरत महाराज का पास टाइम में क्यों आए थे हम लोग? हाँ, माया। तो माया, हम अगर उसके सामने अजामिल जैसा चीज होता, कोई स्त्री या विश्वामित्र जैसा सीन होता, वो ऐसे चुटकी में पास कर जाता, बहुत एडवांस था। उसको कैसे फंसाया माया ने? उपधर्म विधर्म लाते तो वो परोधर्म में है। ट्रांसेंडेंटल रिलीजन ही इज एक्सपीरियंसिंग लव ऑफ कृष्णा। यू ब्रिंग विधर्म, ही विल रिजेक्ट इट इमीडिएटली, है ना, करेक्ट। लेकिन विधर्म नहीं लाए, उपधर्म लाए माया। उपधर्म मतलब दूसरे को मदद करना, छोटे बच्चों को खाना खिलाना। अब लोग सोचते हैं वही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, वही है। तुमको क्या मालूम परोधर्म होता क्या है ना। आजकल लोग यही सोचते हैं ना। समाज में अगर ये आप लोगों को प्रचार कर रहे हैं कि पाप दारू नहीं पीना, ये शास्त्र में लिखा, सभी स्वीकार करेंगे। लेकिन लोगों को बोलो मानव सेवा माधव सेवा, लोग बोलेंगे करेक्ट, यही है धर्म, यही है भगवान। लोग से आपको असंभव है ये बताना, परोधर्म उपधर्म में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। अब भागवत में पढ़िए, इफ यू रीड भागवतम, he says it's a God's arrangement now. This deer has nobody except me to take care. It's God's will I take care of him. He says like this. धीरे धीरे माया पकड़ती है। I am not caretaker of anybody. मैं किसी को मदद नहीं कर सकता, भगवान ही मदद करते हैं, करेक्ट। उनको भूल के बस मेरा ही अभी काम, मेरे को ही बचाना है इसको बस, और इन्वॉल्व हो गए और अटैच हो गए और सब कुछ भूल गए भगवान की सेवा। सो इस तरह ट्रैप करते। तो सिमिलरली कभी कभी लोगों को पूछते हैं ना, टीवी नहीं देखने का, नहीं मैं खाली न्यूज देख रहा हूँ, होता है 15-20 मिनट, लेकिन फिर न्यूज के बाद एक छोटा सीरियल, फिर उसके बाद एक और सीरियल, धीरे 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 माया पकड़ती है। इकट्ठा नहीं पकड़ सकते, इकट्ठा पकड़ेगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं सीरियल नहीं देखता, धीरे 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 धीरे। मैं नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा है, मैं तो खाली मतलब जानवर देख रहा है ना, दुनिया में तरह तरह के जानवर है ना। सो इन द सेम वे Maya catches us. As such, we became devotee by shabadam, 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 shabadam. हमारी भक्ति actually main खाना, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय।
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे भक्ति लता बीज जो माली का एग्जाम्पल दिया चैतन्य चरितामृत में तो पढ़ा है ना, ब्रह्मांड भ्रमित, सबको मालूम है श्लोक, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. दिस इज गिवन. Now this bija is raptured by Shravan. Primary is Shravan there. By Shravanam, and Kirtan. This bija is given water. What is the water said? Shravan Kirtan. So our spiritual life, our faith, our realizations are going up. It's not only logic. Logic to sab rahega, uske baad bhi you can do sinful activity. है ना? It is going up. जैसे we keep reading Bhagavad Gita, we keep chanting Hare Krishna going up. Then what happens? We become little complacent, थोड़े comfortable. We come into what is psychology known as comfort zone. कुछ नहीं होगा, थोड़ा मैं खाली पता कर रहा दुनिया में क्या हो रहा है, धीरे धीरे माया पकड़ लेती है. किसी भी न्यूज़पेपर का आप देख लो, इधर 25 मरे, इधर 50 मरे. लेटेस्ट ब्यूटीफुल फोटोज ऑफ दिस एक्ट्रेस, नेक्स्ट उसके बाद वो. सो इट्स माया, इट्स अ पैकेज ऑफ माया टू ट्रैप. और फंस जाता है एंड पता भी नहीं चलेगा. He will be sitting as a devotee with tilak, but Shravanam is not Krishna consciousness. ग्राम कथा है, एक दीमक की तरह पूरा शरीर खा जाएगा माया. बाहर से नहीं पता चलेगा, जैसे लकड़ी में दीमक खाता है ना, कुछ नहीं बचता है ना, फिर उसका आप छूते वो गिर जाता पूरा. देखे, आपका बॉक्स पड़ा है, किताबों का डब्बा पड़ा है, अभी आप लोग ध्यान रख रहे हैं है ना, उसको हिलाते रहने का, पता भी नहीं चलेगा जब दीमक अंदर घुसता है ना. और एक दिन उठाओगे वो ऐसे गिरेगा फड़फड़, है ना, खा चुका अंदर से. तो सिमिलरली ग्राम कथा विल ईट यू अप फ्रॉम इनसाइड. क्योंकि ग्राम कथा के साथ देखो क्या होता है ना, शब्द कैरीज कॉन्शियसनेस. True? When a pure devotee, we are reading Bhagavad Gita, we are seeing Krishna's consciousness, a pure devotee's consciousness, उसको सुन के हमको बहुत खुशी होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है ना. जो ग्राम कथा के पीछे भी एनर्जी है, वो हम लोग नहीं, हम लोग इंफॉर्मेशन ही खाली नहीं ले रहे. जैसे मैं बोलूं दारू पी, बहुत मजा आया, मैंने दारू पी मजा आया बोला, साथ में उसकी इंफॉर्मेशन के साथ मेरा मजा भी था. करेक्ट? समझ रहे हैं ना इसको? जैसे आपको घर से फोन आया, बेटा कैसे हो. बेटा कैसे हो तो एक स्टेटमेंट है ना, खाली तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन पीछे एक इमोशन था. समझ रहे ना? तो शब्द के पीछे इमोशन रहता है, किसी भी शब्द के. इसलिए प्रभुपाद जब बोलते हैं, आचार्य जब बोलते हैं कि कृष्ण की शरण लो, बहुत शक्तिशाली होता है. पूरी दुनिया में लोग सरेंडर हो गए. अभी भी इस्कॉन के लोग जाते हैं अमेरिका में, ऐसा तो क्यों नहीं हो रहा अभी? प्रभुपाद जब मध्वाचार्य भी, बहुत आचार्य चल रहे थे, लोग पैर में गिर रहे थे, भक्त बन रहे थे, है ना, हो रहा था ना. रामानुजाचार्य चल, शब्द वही बोल रहे थे. ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी कुछ बहुत ही डिफिकल्ट तत्व बोल रहे थे, जो बहुत मुश्किल हम लोग बोल नहीं पाते. ऐसा तो है भाई, कभी कभी ऐसा सोचते हैं. द प्रभुपाद वाज स्पीकिंग सम वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो हमको भी समझ नहीं आए, है ना. प्रभुपाद के सारे लेक्चर उठा के देख लो, इतना सिंपल है लेक्चर, इतना सिंपल है लेक्चर कि समझने में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता है. करेक्ट? वी आर पार्ट एंड पार्ट, एक ही है लेक्चर एक्चुअली. ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स आर सेम. वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी शुड सरेंडर. सारे पर्पस भी सेम नहीं है, नहीं है. हरे कृष्ण मंत्र ही देख लो, 50 बारी गीता में लिखा होगा, वी शुड चैंट देयरफॉर हरे कृष्ण, देयरफॉर वी शुड गो बैक टू गॉड, एंड देयरफॉर वही रिपीट है. करेक्ट ना? बट जो लोग एकेडमिक हिसाब से प्रॉपर किताब पढ़ते हैं, भूल जाते हैं ये किताबें भक्त का हृदय है ना. एंड देन इट्स टोटली डिफरेंट. व्हेन यू रीड इन दैट वे, you actually feel the love of Krishna in this verse. You do not see, oh, that concept hasn't repeated, that concept I have understood. Therefore, reading Prabhupada books is a different thing than just collecting concepts. It's the heart of a pure devotee. Okay? We should surrender to Krishna. Prabhupada said 1,000 times, every time it touches the heart. Right? Because it's the heart of a pure devotee. Prabhupada said these books are my devotional ecstasies. So we should associate here. Because it's not only the words, and as you keep reading, you can see the heart. Bhakt, Krishna, 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 है ना. किसी के साथ रहे तो थोड़े टाइम में you can feel his heart, no?
Krishna, Krishna. That is the desire. And our life becomes perfect. Shastra, I'm not saying Shastra says, Lavamat mein sadhu sangha sarva siddhi hoye. एक थोड़ा भी moment of association of pure devotee can perfect our life. Shastra says. Lava is a time less than a second. 1/14th or something like 1/11. Very small moment of time. That much is enough to make your life perfect and go back to Krishna. That much power sadhu sangha has. Somebody asked Srila Prabhupada. Prabhupada, he read in the Shastra, the Lavmadar sadhu sangha sarva siddhi hoya. So can we have that benefit with you? So Prabhupada said, I am ready. Either are you ready? I am ready to give you that moment association and make you pure devotee. Are you ready to take association? Association lene ke liye bhi we should be ready. Anything should have both. Guru, Shishya, both should be ready. Then it will be effective. So we have a great Acharya, but are we even attempting to get association? Are we having a daily plan to take association of Prabhupada? How unfortunate it is that we have Prabhupada books, we don't take benefit. One day, one disciple went to Prabhupada. Prabhupada ji, man bahut disturbed है. तो ये बताओ, गीता पढ़ते हो क्या? Prabhupada ji नहीं. तो डिस्टर्ब तो हो गई. मैं क्या कर सकता हूँ? रात रात बैठ के किताब में किसके लिख रहा हूँ? पैसे बनाने के लिए. He told, it's for your benefit. He wrote this book for us, but we don't take advantage of hearing Bhagavad Gita. We don't take advantage of hearing Bhagavatam. Then ready ho jao problem ke liye. है ना? The mind will become uncontrolled. By Shravanam, actually life can totally change. So we should take full benefit of the opportunity that we have. So then Parikshit Maharaj is saying, Shuka Muni, Shota Vyadini Raj. लोग के पास तो हजार चीजें हैं सुनने के लिए, लेकिन नहीं सुन सकते भगवान के बारे में, है ना? And then कर क्या रहे हैं? दीवाचार है राजन. दिन में तो लोग क्या कर रहे हैं? पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ. कुटुंब भरे ने नवा, और घर को भरो, फ्रिज लाओ, एसी लाओ, जो कुछ ला सकते हो. और रात को क्या? निदया हयाते वक्तन ववाये न चवावया. रात को सो जाओ एंड सेक्स. खाली रात को ये काम है, दिन में पैसे लाओ, पैसे लाओ. ये क्या जीवन है? देन ही कंक्लूड, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईशो हरि. क्या इस चीजें पढ़े हो? भगवान के बारे में सुनो. श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताम. अगर अभय होना चाहते हो, भगवान की कीर्ति सुनते रहो. ठीक है? सो बी वेरी वेरी केयरफुल. In the beginning of spiritual life, one very important principle is asatsanga tyaga ei vaishnavachara. If somebody is becoming serious in spiritual life, बेवकूफों का संग छोड़ देता. असत्संग त्यागा. अब जैसे ब्रह्मचारी लोग मंदिर में किस लिए हैं भाई? असत्संग त्यागा. That is the principle. And if you do not value that, why somebody will join the temple? Somebody is telling, I am thinking of joining you. Why you will join the temple if you are not wanting to take association of devotees? If for you association of karmis is as good as association of devotees, why you will join the temple? Better rest here, है ना? तो धीरे धीरे पता करना पड़ता है. जैसे मेरे को याद है, when I joined the temple, my main thing was I cannot sit with these people जो कंपनी में थे. पूरे टाइम तमोगुण. लड़का लड़की की बात कर रहा, लड़की लड़का की बात कर रहा, और गंदगी है नहीं सुनना मेरे को. इसलिए I became a brahmachari. So sometimes I look at myself and I think, am I having same level of disassociation? क्या बोला प्रभुपाद जी ने परपट में, है ना? जैसे टट्टी का कीड़ा कितना भी बाहर खींचो वापस ही पकता है ना? और उसी को डिलाइट करता है. So what somebody is hearing will make a change a person. So what am I hearing? If I am hearing Krishna Katha, there is so much Shruti Phala throughout. Bhagavad Gita mein himself Krishna gives Shruti Phala. In so many chapters Krishna says, Arjuna, hear this properly. If you hear this chapter, your life will become perfect. How many chapters it is there, isn't it? 3 modes of material nature, chapter number 14, what does Krishna say? Hear this for your own benefit, Arjuna. Hai na? Krishna is guaranteeing spiritual benefit. At the end of Bhagavad Gita, Krishna says, have you heard this properly? Anyone heard that all the sinful reaction will vanish? Bhagavatam mein again and again Shruti Phala is mentioned. Anybody heard this Leela will go back to God. Prabhupada gives Shruti Phala in Krishna book. Anybody read the Krishna book will get love of Krishna.
श्रुति फला उसको बोलते हैं, है ना? सुन के फायदा होता है, तरह तरह से सुन के फायदा होता है. But we do not want to take that benefit. It is our misfortune. So only what we have to do, we have to change what we are hearing. That's all. Make a plan. Stop, make a determination. I do not want to hear Grama Katha. Then the question will come, particularly for leaders. I should know what's happening in the world. Anna? Follow Prabhupada's example. You are not a leader as big as Prabhupada. Prabhupada is running the whole movement. True, no? He has to know what's happening. How much time Prabhupada used to spend in knowing Grama Katha? 2 or 3 minutes every day. He used to not himself read. He used to make one devotee come and tell him what has happened. He will read the headline. Prabhupada idhar ye bam phata udhar 50 mare. Prabhupada idhar hua. Hamare any news about ISKCON? Haan Prabhupada, an article come out ISKCON. Read that. That article will read. The rest he will say throw. Over. He is busy with his work. After that he is not interested. So this is so, it is so contaminating that Maya will easily trap us, suck us, and dheere dheere we become lost. Okay, so let us just make a simple determination. From today, more and more time I will dedicate to hearing Krishna Katha. I will not dedicate my time for grammar. Just make the determination. And you say, just do it for, see, de-addiction we have to do. Grama Katha is also very addictive. It's like, which category you want to put? Gambling. क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? जुए में क्या होता है? डाइस पे ना क्या हुआ? तो दुनिया में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? आप ऐसी हालत हो जाएगी कि 2 मिनट आप भगवत गीता नहीं पढ़ पाओगे. ऐसी हालत हो जाएगी 2 मिनट भगवत गीता नहीं पढ़ पाओगे. So therefore, what we need to do is that de-addict ourselves. De-addiction चाहिए. जैसे दारू का de-addiction होता है ना? दारू का de-addiction होता है. इसी तरह ग्राम कथा से आपको de-addiction करना पड़ेगा. If you are serious, it's not one day. मैं सोच लिया मैं नहीं छोड़ सकते. दारू सोच लिया छोड़ सकते हो, 1 मिनट में छोड़ सकते हो, लगता है छोड़ नहीं सकते, फंस जाते हो. उसी तरह to become de-addicted from ग्राम कथा, you have to make a program. Maybe take help of any well-wisher. मुझे थोड़ा मदद करो. ये तो घंटे निकल जाते हैं ये ग्राम कथा, है ना? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ये तो 24 घंटे का काम है. आप कब पढ़ोगे गीता? नहीं पढ़ पाओगे. समय बहुत है. 24 घंटे, 24 hours is a very big time. But if you hear Krishna Katha, how much unlimited benefit is there? Therefore, Shastra says, Mahat Seva Dwara Mahu Vimuktam, Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. Isko kyun bol rahe principle ko? If you associate with Mahat, you will get Seva to Krishna. Tamo Dwaram Yoshitam Sangi Sangam. और नरक के दरवाज खटखटाने तो करो तामसी लोगों का संग, है ना? Such a beautiful shloka. But we understand the principle, we appreciate the principle. Now it is for us to act. And if we do not make determination in this area, even though we are doing everything properly, everything will be lost. In spite of so much effort, everything will be lost. Sang is very important. You see in the Nectar of Instruction, Rupa Goswami twice mentioned Sangha in his 11 verses. What is the positive one? Atyahara prayasasya prajalpaniya magraha. Shri Radha Govinda ki jai. Atyahara prayasasya prajalpaniya magraha. Janasanga salolyam cha. Janasanga. Janasanga will destroy your spiritual life. Then again in positive, Utsaha nishya dhairya tat karma pravartana. Sango tyaga sato vritti. Again Sangha tyaga. Sangha is so important, he is mentioned twice in just 11 verses. It's very important that, and Arjuna also changed by association. He heard. What did he do? How did Arjuna change his decision? He heard Krishna. Okay. How did Parikshit Maharaj come to Samadhi on Krishna? He heard Shukamuni. How, you just click the whole list. How is it that Vidura became enlightened? He heard Maitreya. Just whole Vedic literature is here. So hearing is very important, but let us take a decision to de-addict ourselves from the Grama Katha and
which actually is enchanting. There is a shloka in the first canto of the Bhagavatam. It is said that by hearing, Krishna says, if somebody is honest in spiritual life, he will appreciate Krishna Katha, even if it is spoken with little mistakes. Yes, what is the shloka? Famous shloka. Sadvag visargo janataga viplavo yasmin pratishloka abhaddivati api namani anantasya yasho ankitani yat shanvanti gayanti grinanti sadavaha. He said, those who are honest people, very beautiful shloka by Narad Muni to Vedavyasa, they'll appreciate Krishna Katha, even if it may be not so well presented. But on the other hand, what is the second opposite shloka? Natach vachas chitra padam harir yasho. He says, on the other hand, there may be very nicely decorated words, but if it is not properly, if it is not having devotion to Krishna, it compares it to Vayasam Tirtha, pilgrimage place for the crows, where no gentleman likes to go. Now, Prabhupada, what he has compared today, hearing Gramakatha, people who are indulging in Gramakatha, tatti khane wale suar. आप खुद सोचो, इतने स्ट्रॉन्ग शब्द प्रभुपाद ने यूज किए हैं. इफ यू आर ऑल द डे हियरिंग ग्राम्य कथा, यू आर जस्ट लाइक अ स्टूल ईटिंग हॉग, टट्टी खाने वाला सुअर, है ना? वही तो है ना. इन द फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद से रिफ्यूज ऑफ गार्बेज, सेंशियल रिफ्यूज. कूड़ेदान में कौन जाता है? कौवे. ये सब कूड़े के बराबर ही है कथा. और क्या बोला उस पॉलिटिशियन ने, क्या बोला उसने, क्या बोला. क्या होता है, हम लोग द्वंद्व कर लेते हैं. द्वंद्व नहीं करो. द्वंद्व करने में फंस जाओगे. द्वंद्व मतलब दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज नॉट ब्यूटिफुल, दिस पार्टी इज पॉलिटिकल पार्टी इज करेक्ट, दिस पार्टी इज नॉट करेक्ट, माय कंट्री इज करेक्ट, अदर कंट्री इज नॉट करेक्ट. देन द्वंद्व हो गया. देन एवरीबडी वांट टू हियर सम बैड न्यूज ऑफ पाकिस्तान. बड़ी खुशी होती है, मजा आ गया, मरे तो खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे ही होने का. सो देन द्वंद्व हो गया ना. मोमेंट द्वंद्व हो गया, वो माइंड इज इन्वॉल्व. वो पार्टी को मैं सपोर्ट करता, क्या बोला, हाँ वो अप गया, वो दूसरा डाउन गया. होल डे इंस्टेड ऑफ विशिंग टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंस्टेड ऑफ विशिंग तत्ते अनुकंपाम, इंस्टेड ऑफ प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा बी मर्सीफुल टू मी, वी आर डिजायरिंग सम मटेरियल थिंग्स because you have taken side. Now if I am sitting here outside, the dogs of Kodikere are fighting with dogs of Honakatta, should I be interested? Should I take sides? नहीं, पता वो Honakatta जीत रहा है. अरे यार तेरे को कुछ काम नहीं है क्या? Why we are interested? We want to go back to Krishna. No, that Honakatta dogs are today. तुमको कुछ काम नहीं, उधर के उलझ गए, तुम उधर उलझ गए. वहीं आप कभी कभी होता है ना, रास्ते में जा रहे हैं, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो हम भी कुछ टाइम नहीं होता, जाके बैठ जाते हैं कुछ लोग. फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद साइड ले लेते हैं, वो जीतना चाहिए, वो हारना चाहिए, एंड दैट्स लॉस्ट. Just like some people, Ukraine, Russia war, somebody said Russia should win. तुमको क्या कुछ काम नहीं क्या? तुमको उधर के कुत्ते, उसके उनको किसी को भगवान से मतलब है नहीं है. होना कहते के कुत्ते कोड़ी के कुत्ते से लड़ा, तुमको क्या इंटरेस्ट है उसमें? कालम कर्म के अनुसार हो जाएगा. जैसे किसी घर में लड़ाई हो रही है, आप तो बाहर से जा रहे थे, तो अंदर घुस गए, क्या हो रहा है, लड़ाई चल रही है, और उसके बाद आप साइड ले ली, इसको जीतना चाहिए, फिर आप देख रहे हैं कौन जीत रहा है. तुम्हें कुछ काम नहीं क्या? क्यों क्यों उस पर तुम अपनी हाथ पैर डाल रहे हो? But this requires discrimination. Strong words of the Acharya will help you. Prabhupada is speaking very strong words, है ना? Saying this is, those indulging in Grama Katha are actually like pigs eating stool. But that discrimination is not easy. So what we should do? De-addict ourselves from Grama Katha and come to Krishna Katha. And limit your time. You have to just touch little Grama Katha. But see, it doesn't suck you. है ना? अदरवाइज भारत महाराज की जगह नेक्स्ट हमारा केस भी भागवत में एक स्टोरी आ जाएगा. भगवत भक्ति करने आया था, जब कर रहा था, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू किया, फिर एनडीटीवी पढ़ा, फिर ये न्यूज़ पढ़ा, फिर सीएनएन पढ़ा, फिर ये पढ़ा, और उसके बाद भगवत धाम नहीं जा पाया. सैड न्यूज़ है ना. अगले जन्म में कृष्ण ने याद दिलाया तू कुत्ता बना था, लेकिन पिछले जन्म में ये पढ़ रहा. It will, why make it a sad story? Why not make it a happy story? Hare Krishna everybody. Thank you.
Hare Krishna Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Dandavat Pranam. Thank you. Nice class, Prabhuji. Very nice class. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna, Krishna Hare Priya. Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna.